डियर स्टूडेंट्स प्रीवियस क्लास रे हम पहले डिस्कशन करथिले लेंस लॉ। आज देखिबा हम कहिथिली मोशनल ईएमएफ द मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ द मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ हमें को मेथड रे प्रोड्यूस करि परिबा हमें जानले according to Faraday's laws of electromagnetic induction an EMF is induced in a circuit when the magnetic flux linked with it changes अब magnetic flux को हमें भिन्न भिन्न उपाय रे चेंज करि परिबो by using different methods जेकोनोसी मेथड रे भी हमें यूज करिबा जदी चेंज करिबा मैग्नेटिक फ्लक्स ताले EMF इंड्यूस हो नंबर 1 by changing the magnetic field मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को चेंज करके हमें ईएमएफ इंड्यूस कर देबो नंबर 2 बाय चेंजिंग ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल with respect to the magnet माने एंगल एठी चेंज करियो theta angle orientation of the coil with respect to the magnet respect रे हम यदि चेंज करि परिबा the angle ताले हम EMF इंड्यूस करि परिबो नंबर 3 by changing area of the coil of the current loop और कंडक्टर रो एरिया चेंज करके भी हमें ईएमएफ इंड्यूस करि परिबो एई मेथड रे जो ईएमएफ हम इंड्यूस करूछंती ताको कहउछंती मोशनल ईएमएफ आज हम सेटा पढिबा मोशनल ईएमएफ केमिति कंडक्टर रो मोशन जगु ईएमएफ इंड्यूस होची कंडक्टर रे सेटा देखिबो बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट हम लिखिले बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड जदि हमें मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करबा ताले मैग्नेटिक फ्लक्स जहा लिंक होउची सर्किट सहित सेटा चेंज हबो जा फल कि ईएमएफ इंड्यूस हो यदि मैग्नेट रो मोशन हमें करे बाय चेंजिंग ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल विथ रिस्पेक्ट टू मैग्नेट जदि हमें कॉइल रो एंगल मैग्नेट सहित चेंज करबा कॉइल रो एरिया रो एंगल मैग्नेट सहित चेंज करबा ताले फ्लक्स जोटा लिंक होउची सेटा भी चेंज हबो जा फल कि ईएमएफ इंड्यूस हो by changing area of the current loop रो एरिया जदि हम चेंज करिया ताहले भी मैग्नेटिक फ्लक्स जहा लिंक होची सेटा चेंज हो एंड वी नो दैट changing magnetic flux is the source of induction of EMF मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हेले ही EMF इंड्यूस हुए सर्किट एबे देखिबा हमें मोशनल EMF that is EMF induced by changing area of the लूप एरिया ऑफ द कॉइल माने करो गोटे कंडक्टर पिले अछि PQ हियर इज ए कंडक्टर PQ गोटे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रे अछि द कंडक्टर PQ इज इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड इनवर्ड्स टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड perpendicular to this plane and directed inwards ए मैग्नेटिक फील्ड रे गोटे कंडक्टर हमें रखिले PQ जहा को किछि वेलोसिटी रे हमें मोशन करले टुवर्ड्स राइट v वेलोसिटी रे हमें मोशन करले मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर and the velocity is perpendicular to both magnetic field and the conductor दीटा जाको परपेंडिकुलर जदि एटा गोटे कंडक्टर हमें जानि छंती एथिरे बहुत अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अछि ए नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स having random motion in the conductor and we will neglect the random motion because the net magnetic force due to the random motion is zero on the electrons so the electrons are moving in random motion in the conductor
and with a velocity v towards right, ताले magnetic field जोगु इलेक्ट्रॉन गुड़ा का ऊपर गोटे फोर्स पड़िबो. Magnetic field is B directed inwards. This is the velocity directed towards right. According to Fleming's left hand rule, we can find the direction of force. This is the direction of motion of the charged particle. This is the direction of magnetic field. This is the direction of This is the direction of motion of positive charge, and this is the direction of force. जेहेतु इलेक्ट्रॉन गुड़ा नेगेटिव चार्ज ताले फोर्स टा रहिबो डाउनवर्ड्स. पॉजिटिव चार्ज हेतिले मैग्नेटिक फोर्स हमें लिखि थांते Fm is equal to Q into V cross B. এই ফোর্সটা পিলে রহিথান্তা अपवर्ड्स যদি চার্জটা হইথান্তা পজিটিভ. এଠି আমি লিখিবা Fm is equal to minus E into V cross B. Minus E into V cross B. So the direction of motion of the positive charge, negative charge will be towards Q. Fm. Fm ro direction rahibo from P to Q. Due to this magnetic force, there will be a separation of electrons. Electron गुड़ा का P ru Q आड़ को move करिबो. P टा है जिवो positive terminal, Q टा है जिवो negative terminal. After an instant of time, there will be equilibrium. Due to the potential difference between the terminals P and Q, P will be at positive potential and Q will be at negative potential. Because electron separation occurs, the electrons are moving towards the terminal Q and P terminal is acquired with a positive charge. So Q terminal टा पिले हिजो नेगेटिव टर्मिनल, P terminal टा हिजो गोटे पॉजिटिव टर्मिनल. As if it is a cell. गोटा सेल रो दीटा टर्मिनल हिसाब रे काम करिबे P terminal and Q terminal. जदि P terminal और Q terminal को मो गोटे सर्किट रे कनेक्ट कर देबी, ताले करंट will be produced from P to Q in the external circuit. Because P is at positive terminal and Q is at negative terminal. At equilibrium, जेहेतु इलेक्ट्रॉन सेपरेशन होउची, गोटे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होउची inside the conductor. There is an electric field produced inside the conductor and the electric force is given by QE, that is minus E into E. At equilibrium, mod of Fe is equal to mod of Fm. That implies EE is equal to Q E into V cross B, or that implies E is equal to V cross B. जो इलेक्ट्रिक फील्ड टा क्रिएट होची कंडक्टर भितरे ता जो फोर्स पड़िबो इलेक्ट्रॉन उपरे फ्रॉम P to Q. The electric field is directed from P to Q. Q is at negative potential and P is at positive potential. Electrons are separated and Q is accumulated with the negative charges or electrons and P is at the positive terminal, at the positive potential. So at equilibrium हमें पाइले E is equal to V cross B. The work done, कंडक्टर रो लेंथ रा पिले जो कंडक्टर टा हमें नहीं छने तारो लेंथ टा होची L. So the work done in moving the charges from P to Q is equal to work done W is equal to Fm dot L. So that is equal to magnetic force BeV L
of 0 because the direction of Fm and L is same. So the angle between Fm and L is 0. Now the induced EMF is equal to work done per unit charge. The induced EMF is equal to work done per unit charge. So that is equal to BEVL divided by E, or that is equal to BVL, or induced EMF E is equal to BVL, where B is the magnetic field strength, V is the velocity of the conductor, L is the length of the conductor. এই EMF টাকে আমি কইলে দিলে মোশনাল EMF, motional EMF. The motional EMF E is equal to BVL. এই motional EMF টা ক্রিয়েট হবে যদি আমি কন্ডাক্টরটাকে মোশন করিবা in the uniform magnetic field which is directed inwards perpendicular to this plane of the bore and directed inwards. এই motional EMF ru আমি পিলে consequence নেই পারিবা theoretical proof of Faraday's law and Lenz's law is in accordance with law of conservation of energy. ए दुटा जाको हम प्रूफ करि परिबा by using this concept of motional EMF. motional EMF रो concept को यूज करी कि हमें प्रूफ करि परिबा theoretical proof of Faraday's law and Lenz's law is in accordance with law of conservation of energy. So देखिए प्रथमे theoretical proof of Faraday's law. एटा हला PQ कंडक्टर जोटा को हमें मोशन करूथिले गोटे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भितर. These terminals P and Q are acting as the two ends of a cell which can provide electric current in an external circuit. So एबे आपको गोटे सर्किट रे हम कनेक्ट कर दबा. माने करो गोटे U शेप कंडक्टर रो आर्म्स ऊपर मूव करूची PQ कंडक्टर ता. गोटे U शेप कंडक्टर अछि KL MN KL MN और arms ऊपर कंडक्टर ता मूव करूची. PQ conductor is moving on the arms of the conductor. U-shaped conductor KLMQN. PQ is the conductor that is moving on the arms of the conductor. Due to the motion of the conductor towards right, the area is increasing. The area of the conductor, the area of the loop is increasing. Area टा पिले बढ़िबो. हमें जानिले the induced EMF E is equal to BVL. जदि धर कंडक्टर टा मने कर dx डिस्टेंस ट्रैवल करूची. ए डिस्टेंस टा हला dx इन टाइम dt हमें लिखि परिबा v is equal to velocity is equal to dx by dt. Now induced EMF E is equal to B dx by dt into L. So now L dx is equal to dA. Change in area of the loop. Change in area of the loop is equal to L dx. L is the length of the conductor. L dx is the change in area of the conductor. So L dx is equal to dA. Now we can write B dA by dt, or that is equal to d by dt of BA. आमे जानि छंदी पिले BA टा होची मैग्नेटिक फ्लक्स.
So that is equal to d phi v by dt. According to Lenz's law, the direction of induced EMF is such that it opposes the very cause which produces it. देखो पहले एटी मैग्नेटिक फ्लक्स टा इंक्रीज होची ड्यू टू द मोशन ऑफ द कंडक्टर. ड्यू टू द मोशन ऑफ द कंडक्टर एरिया टा इंक्रीज होची. एरिया इंक्रीज होला फଳରେ मैग्नेटिक फ्लक्स टा इंक्रीज होची. एबे इंड्यूस्ड ईएमएफ जो करंट टा फ्लो हबो, that current will try to decrease the magnetic flux because the induced EMF due to increasing magnetic flux. So the induced EMF and induced current will try to decrease the magnetic flux. So the current will be in the direction PLMQN. PLMQN direction rehele magnetic flux will be outwards. So that will try to decrease the magnetic flux. So हमें लिखि परिबा E is equal to minus d phi v by dt, which is Faraday's law. Faraday's law of electromagnetic induction. तो हमें पाई गले मोशनल ईएमएफ को यूज करी कि E is equal to BVL ताको यूज करी कि हमें पाई गले Faraday's law रो theoretical proof. We can prove Faraday's law of electromagnetic induction theoretically by using the concept of motional EMF. So motional EMF को हमें यूज करी कि एबे डिराइव कले जे E is equal to minus d phi v by dt, which is Faraday's law of electromagnetic induction. जानी हला पिले. So जदि हमें increasing flux जो induced EMF होची, then that induced current will try to decrease the flux. So the decreasing flux जो EMF induced होची, that induced EMF or induced current will try to increase the magnetic flux. Here यदि करंट PLMQ डायरेक्शन रे फ्लो करिवो ताले मैग्नेटिक फ्लक्स रो डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड रो डायरेक्शन रहिवो टुवर्ड्स द रीडर. ओरिजिनली अछि अवे फ्रॉम द रीडर. सो टुवर्ड्स द रीडर होबो माने इट विल ट्राई टू डिक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स बिकॉज़ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ड्यू टू इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स. मैग्नेटिक फ्लक्स ता इंक्रीज होतवा जगरु इंड्यूस्ड ईएमएफ ता क्रिएट होची. सो ताकू डिक्रीज करिया पई चाहिबो इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट. सो सेटा को डायरेक्शन में फ्लो हबो PLMQP ए डायरेक्शन में फ्लो हबो PLMQP ए डायरेक्शन में फ्लो हेले सेटा इंड्यूस्ड ईएमएफ ता मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज करिवा को चेष्टा करियो हला. सो एबे देखिबा आउ गोटे कॉन्सिक्वेंसेस दैट इज Lenz's law is in accordance with law of conservation of energy. Lenz's law is in accordance with law of conservation of energy. से समान जिनस हमें नबा PQ कंडक्टर अछि ताको हमें गोटे U शेप कंडक्टर रो आर्म रिमूव करिबा KLMN U शेप कंडक्टर तार आर्म ऊपर मूव करिबा स्लाइड करिबा काकू द कंडक्टर PQ जोठी की गोटे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अछि दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन and directed inwards. The magnetic field is perpendicular to this plane and directed away from the reader or inwards the plane of the board. So now the conductor PQ is moving towards right side with a velocity v. The velocity of the conductor is constant, so the net force is on the conductor is 0. Let Fa is the applied force and Fm is the magnetic force. आमे जानी छंती if a conductor is placed in a uniform magnetic field, current carrying conductor,
that experiences a force I into L cross V. So Fm is equal to I into L cross V. Here the angle between L and V is 90 degree, so that is equal to ILV. Fa is the applied force on the conductor. As the conductor is moving with constant velocity, the net force on the conductor is 0. So Fa plus Fm is equal to 0, or Fa is equal to minus Fm, or magnitude of Fa is equal to magnitude of magnetic force. Applied force ର magnitude ସହିତ magnetic force ର magnitude ଟା ସମାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା କହିଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ପାୱାର। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ପାୱାର the magnetic force Fm is equal to ILV. Now the current through the circuit I is equal to BVL by R. So the work done W is equal to the resistance of the conductor resistance is equal to R. Now the electrical power P electrical is equal to I square R, or that is equal to BVL by R square into R, that is equal to B square V square L square by R. So this is the electrical power generated due to the motion of the conductor and due to the induced EMF and induced current. This is the electrical power. Now we will calculate the mechanical power. If the mechanical power is equal with the electrical power, then Lenz's law is in accordance with law of conservation of energy. The applied force Fa is equal to ILB, because Fa magnitude is equal with the magnitude of Fm, and the velocity is V. The velocity is equal to V. Now mechanical power Pm is equal to Fa dot V. Mechanical power Pm is equal to Fa dot V, that is equal to ILV into V. Angle between ILV and V is 0 degree. The force on the conductor and the velocity is in same direction. So ILV into V. So the induced EMF V जगह पे हमें लिखि परिबा, that is ILV due to the induced EMF. So the mechanical power Pm is equal to ILV into V. The angle between ILV and V is 0 degree. So cos 0 is equal to 1, ILV into V. Now substituting for I is the EMF by resistance, that is BVL by resistance R into BVL, or that is equal to D square V square L square by R. Now look at these two equations. The electrical power V square L square by R is equal with the mechanical power. So the electrical power is equal with the mechanical power. So it will conclude Lenz's law is in accordance with law of
conservation of energy. सो आम आज पढ़िले मोशनल ईएमएफ रो दीटा कॉन्क्वेंसेस पढ़िले theoretical proof of Faraday's law and Lenz law is in accordance with law of conservation of energy. So बुझी पारथियो पिला माने जे न बुझी पारथियो डाउट सेक्शन में पिला माने मते पचाइबो यूजिंग माय WhatsApp नंबर. नेक्स्ट क्लास रे हम कंटिन्यू करिबा सेल्फ इंट्रोडक्शन.